आज का एपिसोड उन लोगों के लिए जो पूछते हैं भूत होते हैं क्या, आर घोस्ट्स रियल। अभी रात का 1:10 हो रहा है, 1:10. Okay, that's a very weird number to see, but okay. And like evidence-wise, you can see my dog is sleeping. And I decided to shoot a paranormal video. So usually हम जैसे लोगों के लिए या फिर usually लोगों के लिए अगर थोड़ा बहुत भी paranormal कुछ होता है उनके लाइफ में, so हम इधर उधर की सुनते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लेते हैं. बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ एकदम हकीकत है. लाइक फॉर सम पीपल इट्स अ क्वेश्चन इफ पैरानॉर्मल एग्जिस्ट्स, बट फॉर सम पीपल अगर तुम वैसे जगह पे रहते हो या फिर वैसे जगह पे जाते हो, यू विल बी बाउंड टू बिलीव इन इट बिकॉज इट डेफिनेटली डज. एंड ऐसे ही हम एक स्टोरी सुनने वाले जो कि बहुत बहुत पॉपुलर स्टोरी है, सभी को पता है, विच इज द कॉन्जरिंग. सो कॉन्जरिंग का जो घटना है, आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस नोज इट. हम लोगों के लिए वो सिर्फ एक मूवी है, बट कुछ लोगों के लिए वो हकीकत था. एंड दैट हाउस एक्चुअली एग्जिस्ट्स टिल डेट. एंड एड एंड लोरेन वॉरेन जो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स थे इस केस में. लोरेन वॉरेन वॉज अलाइव टिल वेरी रिसेंटली. आई थिंक 2-3 साल हुए हैं दैट शी डाइड, और जस्ट अ बिट मोर मे बी. बट they were actually investigators. They were actually a couple who worked with this case. And जब एड एंड लोरेन वॉरेन के पास ये Conjuring के जो मूवी का डायरेक्टर है, when he went to them, उन्होंने पूछा कि what's your best story? And then Ed Warren gave the story of Conjuring. That is how we know this story. And yeah, today I'm gonna watch with you guys the real story of the Conjuring. मतलब जो लोग actually में Conjuring house में रहते थे, which is the Perrin family. So हम उनका एक रियल लाइफ फुटेज पे रिएक्ट करेंगे जो वार्नर ब्रदर्स ने पहले शूट किया था एंड थैंकफुली यूट्यूब में डाला था. सो लेट्स रिएक्ट टू इट एंड लेट्स होप यू गाइस एंजॉय दिस एपिसोड. एंड इन केस यू डोंट नो कंजरिंग द मूवी, अभी हम जो फुटेज पे रिएक्ट करेंगे, यू विल गेट टू नो द स्टोरी एनीवे, बिकॉज वो लोग रियल लाइफ में ये फेस किए थे. As I grew up, I had access to an 80,000 volume library. And I read from that library extensively about religion, all the religions of the world. And I was really an atheist at that point when we moved to the farm. But things began to happen in the house. Okay. Yeah, so in case you guys don't know, this is Carolyn Perrin, who is basically who was the wife in the story. So जो मदर होती है कैरोलिन पेरिन, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई थी. एंड टेक्निकली वो ऐसे लेविटेट हो गई थी हवा में. अगर आपने मूवी देखी है, यू कैन रिलेट. इन केस नॉट, वैसे सोफा से हवा में उनके एक्चुअल घर पे, वो सोफा पे भी है. So this was Carolyn Perrin, and I'll restart the video for you guys to hear her out. She says that she was an atheist. For all you guys who are atheists out there, और जो बिलीव नहीं करते या बिलीव नहीं करना चाहते हैं apparently, it's cool, that's your choice. But trust me, ये बंदी वही बोलती है that she was an atheist and she did not believe in God or anything. As atheists, by the way, are those people जो बिलीव करते, मतलब नहीं भी करते और करते भी, कोई भी मतलब वो साइड पे नहीं है. So they are basically non-believers. So she was an atheist. वो भगवान पे या बेसिकली वो किसी भी कुछ भी बिलीव नहीं करती थी. एंड देन शी बिकेम अ बिलीवर बिकॉज ऑफ दिस हाउस. ओके, लेट्स रीस्टार्ट द वीडियो. देखते हैं. As I grew up, I had access to an 80,000 volume library. And I read from that library extensively about religion, all the religions of the world. And I was really an atheist at that point when we moved to the farm. But things began to happen in the house. My wife, she saw an ad in the newspaper and decided she would go and look at it. And while I was away, I guess I was away for about 3 days, and during that period, she looked at it, liked it, and put a deposit down on the house. This is Roger Perrin, who was the husband
एंड ये जो पीछे आप देख रहे हो ये बच्ची है जो मूवी में दिखाएगा था, छोटे छोटे बच्चे, ऑब्वियसली अभी बड़े हो गए. सो दैट इज क्रिस्टीन पेरिन एंड दैट इज नैन्सी पेरिन एंड दिस इज रॉजर. And during that period, she looked at it, liked it, and put a deposit down on the house. The idea of living on 200 acres in a beautiful home like that was... It's basically a house in the woods. एकदम woods के बीचों बीच है. If possible, I'll show the picture as well over here of the house right now, currently. That's enough to fire you up. It was beautiful. This is beautiful. ये मूवी से scenes है. The day we moved into the house, it was very chaotic. We were trying to move out the previous owner while we were trying to move in a family of 7. So it was pretty chaotic. And I came running through from the kitchen to the front hallway and into what became our dining room. And there was this man standing there. And as children do, I was just like, okay, it's somebody. And I ran off to play. The house was straight out of the 30s or 40s. It had linoleum on the floor. There was no modern conveniences. The house was 110 feet long, and just walking it back. And the house is still right now like that. अभी भी वैसे वुडन चिमनी का जगह एकदम 30s और 40s के स्टाइल का, एकदम पुराने जमाने का हाउस है वो. And yeah, you'll get to know why. Basically ये हाउस वॉर टाइम से भी, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस टाइम से भी यहाँ पे लोग सोल्जर्स रहते थे. सो काफी सारे स्पिरिट्स एंड हॉन्टिंग्स हैं यहाँ पे. बट टेक्निकली द बेसमेंट इज सपोज्ड टू बी नोन एज द मोस्ट मैलिशियस, ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट बट डिमोनिक. सो या रिसेंटली भी उस हाउस पे काफी सारे यूट्यूबर्स जा चुके हैं. काफी सारे मराठी बोल रही हूँ तो हाँ, और मुझे मराठी आती भी नहीं है. Anyway, let's start. Back and forth, walking the length of the house, unpacking and getting the children settled. My muscles of my legs started to hurt, and that was the beginning of the pain. It drained my mother's energy so severely that she would sleep in bed for like 2 years. She could hardly get out of bed. Because it caused her so much depression too. Fear for her children, fear for herself. Terrible fear for us. I met one of the neighbors, and she said to me, when the Kenyans lived here, they left the lights burning in the house all the time, all day long, all night long. And I thought that was kind of strange. But that was clarified for us by Mr. Kenyon. He said, for the sake of the children, you should leave lights on at night. When you walk in a house that evil, you know that house really had very, 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 very bad. This is Lorraine Warren herself. And if you have seen the movie, you'll know कि she was one of the investigators. मतलब Ed Warren की बीवी थी है, and she was one of the investigators for this. They were actually more than paranormal investigators, I think. They were extreme believers in Christianity and the faith, that is Jesus and God. I think इस वजह से वो खुद बोली है that is why she could do what she could do, and she was basically a psychic. So a psychic is basically a medium जिन लोगों को दिखता है कुछ भी फीलिंग होती है, या फिर एक्चुअली कुछ लोगों को दिखता है जिसको हम एक टर्म पर्टिकुलरली कहते हैं क्लैरिफॉयंस. तो उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, खुद गूगल करके देख लेना. बट या शी इज द बेसिक इन्वेस्टिगेटर. एंड लाइक इसके पहले हमने जैसे सुना कि कैरोलिन पेरिन जो उनकी मम्मी थी, उससे वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई थी. वो डिप्रेस रहती थी 2 साल ऑलमोस्ट, उसने उठाई नहीं बिस्तर से. वही उनके बेटियां अभी बोल रहे थे इसके पहले. सो दैट इज व्हाट. एंड कैरोलिन पेरिन के नेबर ने उनके पहले जो रहते थे, उनके नेबर ने उनको बोला था कि कीप योर लाइट्स ऑन हमेशा 24 आवर्स. तो इनके नेबर्स ने उनको बोला कि हमेशा अपने लाइट को ऑन रखना, बिकॉज लास्ट टाइम भी जो इन लोग इस हाउस पे रहता था वो लोग यही करते थे. एंड उन्होंने ये भी बोला था इफ यू केयर फॉर योर चिल्ड्रन देन प्लीज ये लाइट्स ऑन रखना, जो कि काफी वियर्ड था. बट यू नो व्हाई, बिकॉज अभी वही वो बोल रही है लोरेन कि कहीं पे खराब एनर्जी होना एक चीज होता है,
और वो डिमोनिक मतलब कुछ अलग ही होना, वो कुछ अलग ही, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, वो कुछ अलग ही होता है. बेसिकली ह्यूमन स्पिरिट एंड डिमोनिक स्पिरिट अपेरेंटली has two different energies altogether. So Annabelle का भी स्टोरी जो है वो काफी डिमोनिक है. So मैंने पर्सनली रिसर्च किया है या फिर देखा है, जो भी वीडियोस मैं देखती रहती हूँ, तो मुझे उससे जो समझ आया कि ह्यूमन स्पिरिट्स बेसिकली डू नॉट हैव सो मच ऑफ एनर्जी, इतना पावर नहीं उनके पास कि वो इतना, अगर कोई ह्यूमन अगर अच्छा भी स्पिरिट नहीं है, सपोज वो अपने लाइफ में अच्छा सोल नहीं था, सो इफ यू आर नॉट अ गुड सोल इन लाइफ यू विल नॉट बी अ गुड सोल इन डेथ, राइट? तो वो मर के भी वैसे ही रहेगा, बट उसमें उतना एनर्जी या फिर उतना पावर नहीं रहता है कि लेविटेट करना या फिर चीजें फेंकना एंड थिंग्स लाइक दैट. दीज थिंग्स अ लॉट ऑफ पावर एक्चुअली. सो ये एक चीज है, बट डिमोनिक स्पिरिट्स जो कि अलग ही लेवल पे ये हो सकता है. ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड से दैट डिमोनिक स्पिरिट्स आर वेरी मैनिपुलेटिव, राइट? लाइक वो कभी भी तुम्हें ऐसे, अगर कोई बेसिकली इफ यू आर इंटरैक्टिंग विद एनीथिंग व्हिच इज स्पिरिचुअल, अभी इतने सारे एप्स आ चुके हैं, you know, paranormal कुछ भी आ चुका है. How do we know if it's like a human spirit and a demonic spirit? Is what I think is that, and what I've seen in the researches is that for a demonic spirit, it will be manipulative. It will not showcase itself as very, very harmful in the first go. If it's showcasing itself as very, very harmful, maybe it's a negative spirit, but maybe it's not, not necessarily always, but maybe it's not demonic all the time. Demonic spirits can be manipulative. I say this because Annabelle में भी ऐसे ही होता था कि firstly उसको ऐसे चिट्स मिलते थे. If you have seen the movie again, ऐसे चिट्स आते थे Annabelle मूवी में, वो नर्सेस के पास. तो एक नर्स को उसकी मम्मी ने गिफ्ट किया था ये Annabelle डॉल, एंड उसको घर पे ऑटोमेटिक चिट्स मिलता था, हेल्प मी, हेल्प अस, ऐसे करके. एंड उसके बाद उसने साइकिक बुला लिया, उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि साइकिक ने बोला कि इसमें तो कोई बच्ची का सोल है, एंड इसके वजह से दे गॉट वेरी नॉर्मलाइज्ड विद इट कि हाँ बच्ची का ही सोल है, इट्स लाइक अ डॉल. बट उसके बाद से एक नर्स के बॉयफ्रेंड जो वहाँ पे सोता था, तो ही गॉट नाइटमेयर्स, और नाइटमेयर्स में उसने देखा कि एनाबेल ऐसे उसके ऊपर क्रॉल करके आ रही है, उसको स्क्रैच कर रहा है. एंड नींद से उठ के भी उसने देखा कि उसके पीठ पे ऐसे पूरे स्क्रैचेस का लिटरली दाग है. सो दिस इज व्हाट आई वुड से. उसने पहले ऐसा शोकेस किया कि वो अच्छी स्पिरिट है, वो बेचारे लाचार है, छोटी सी है. शी शोज्ड herself as a 7-year-old spirit, but actually it was not. It was way more than that, and we know the story. If you don't, I'll come with another episode of Annabelle detailed, but right now let's do Conjuring. Conjuring अलग in a way दोनों stories ही एड एंड लोरेन वॉरेन के stories है, so that is how it's linked. But Conjuring एक घर है, पूरा घर, पूरा लैंड वो फार्म लैंड है, एंड पूरा ही हॉन्टेड है वैसे. But Annabelle is like, but yeah, this is the difference between demonic and human spirits. I think so. In her day, she was the house of the county, you know, the one that you drive by and they're like, that was the first house. And that's what she was. And when the witch and all these ghosts moved in, they just slowly just chipped away at her, and like the cracks showed up and the veining and the darkness of the house. We started to absorb the karma of the house almost as through osmosis. We would hear the mournful, pitiful, sad weeping of children in the house. And it was all Do you see how she's like, she can still feel it. She's like ऐसे करके, God. मतलब वो लोग जब घर पे रहते थे, they could hear the children weeping. मतलब बच्चों के रोने की आवाज. I can't even imagine. You can't even, क्योंकि वो लोग नॉर्मलाइज हो चुके थे ना, वो वहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे, उनके दिमाग में ऐसे कुछ नहीं था. She was an atheist. और जब आप ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते उस टाइम पे सबसे ज्यादा वैसे होता है. आई थिंक, माय गॉड, इट्स सो हॉरिफाइंग. always that one bedroom window, that middle bedroom window, and it was though she had the window open and was hollering out the windows, "Mommy, mommy," just wailing. Lorraine came. She was very sweet. She was very gentle with the children. एक विंडो वैसे था जहाँ पे, जो विंडो ऐसे मूवी में ऐसे दिखाया था, जो शीट्स वाला सीन दिखाया,
बट एक विंडो ऐसे था वहां पे एक्चुअली में घर पे जहाँ से you could see or feel. Yeah. उसके बाद लोरेन वॉरेन का एंट्री. But she started to issue warnings to me. I knew the house was haunted. All I had to do was walk in it. We just had to find the source. My mother did an inordinate amount of historical research on the house. And the reason that she did was not only was she fascinated with the fact that we were living in a 1736 house, but she also knew by the time that we started to see multiple spirits in the house, she wanted to know who it was. And that's when we learned about Bathsheba Sherman. We wanted to get deeper into this case, yes. We definitely we went up there so many times to try to find the help, to really try to find it for them. But it was very sad. I told her about some of the things that had happened. I woke to the smell of smoke in my bedroom. And then there was Bathsheba. This is when she put the curse on me. What she said at the last of it is, next time we meet, we too be dead. The spirit that was most threatening to her liked to manifest with fire. In that house, we had much happiness and many happy times together, but we had horrible things happen too. Logic tells you that something that is immaterial, that is a shadow, that's a mist, that's a wind that passes by you and lifts your hair, cannot really hurt you. I still feel threatened. I feel threatened. When you see the pain in her face and oh my god. Like, this is why I started the video saying that for some it's just a story, but for some it's real. And you think, या फिर कुछ लोग ऐसे लगता है कि हाँ यार भूत है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है. जिन लोगों के लाइफ के ऊपर हुआ है ब्रो और जिनके साथ होता है उनसे कभी पूछ के देखो. It will be a completely new and different story, and it is actually very very painful. I completely understand. Even though मैंने personally इतना intense कुछ feel नहीं किया है, कुछ थोड़े बहुत इधर उधर के stories है जो मैं share भी करती हूँ, but इतना intense और वो घर इतना manifesting है, वो घर इतना ज़्यादा negative है कि you can imagine, right? उन लोगों को spirits देखना start हो गया था. Basically उनके मम्मी को सबसे ज़्यादा spirits और सबसे ज़्यादा वो effect होने लगा, और उसके बाद से वो इतना रिसर्च करने लगी उस घर पे. वो ऐसे ही रिसर्च नहीं कर रही थी, वही उसके लड़की ने अभी बताया कि ऐसे वो रिसर्च नहीं कर रही थी क्योंकि उनको जानना था, क्योंकि इतने सारे स्पिरिट्स उसने देखे उस घर पे. और जब आप ऐसे घर पे रहने लगते हो तो लिटरली वो घर उससे एनर्जी ले रहे थे, मतलब उनसे एनर्जी ले रहे थे. अगेन वेरी स्पिरिचुअली स्पीकिंग, हम सबकी एनर्जीज होती है. एनर्जीज क्या है इन इजियर टर्म्स? वाइब. हम बोलते हैं ना हमारे साथ वाइब नहीं करते, इसके साथ वाइब नहीं किया. वाइब क्या होता है? वाइब्रेशन. वो है होता है अपना एनर्जी, जो कि अपना सबका एक एक ऑरा होता है. अगर वो ऑरा मैच नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है, जो भी है. तो आप सबका, हम सबका, मेरे डॉग्स, एवरी लिविंग थिंग हैज इट्स ओन ऑरा एंड इवन डेड थिंग्स. इसीलिए हम जहाँ पे जाते हैं, हमें अगर वी फील सैड तो वो उस जगह का ऑरा है, उसका एनर्जी है. तो वो घर ही ऐसा है. सो बैक टू द वीडियो. थोड़ा सा ज्ञान हो गया. बट शी स्टिल फील्स थ्रेटन्ड एंड अभी भी उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं. ये मूवीज के सीन है. I don't know that I'll even be willing to see the film. In fact, I doubt very much that I will be willing to see the film. For the same reason, I'm unwilling to ever go back to the house, especially to ever go inside the house again. I never would. मतलब उनको ये इतना अफेक्ट किया है that वो तो वो घर पे कभी वापस जाने ही नहीं वाली, of course. But she is not even sure if she can watch the film. इतना ही वो अफेक्टेड हुई है. अभी हम कॉन्जरिंग हाउस का थोड़ा सा तो बैकड्रॉप समझ लिए हैं कि द रियल पीपल हु लिव्ड क्या कैसे. अब हम आज के मतलब 2020 का वीडियो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे. सो मई 2020 उस टाइम का. अभी सो बेसिकली अभी ज्यादा रिसेंट चेंजेस हुए नहीं है. I think the owners have changed. Otherwise, this is how Conjuring House right now is.
और हम ये क्लिप्स में कुछ एविडेंस लाइक टॉप 10 एविडेंस क्लिप्स फ्रॉम द रियल कंजरिंग हाउस लाइव स्ट्रीम, लाइक यू कैन सी द टाइटल. सो ये एक्चुअल में कंजरिंग हाउस है एंड 10 टॉप एविडेंसेस है इसमें कि वाई सिक्योरिटी कैम फुटेज हाउस में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ही यूजुअली रहते हैं या फिर ओन करते हैं वैसे. Did something happen? What happened? Yes, something just did. Yes, something just did. That is one of their daughters. It's fine. It happened. So whatever just fell behind you is something that happens quite a bit at the house. ये जो है ना, ये उनकी एक्चुअल बेटी है जिन्होंने कंजरिंग के ऊपर बुक भी लिखा है और उन्होंने वहाँ पे मेंशन भी किया है कि एक्चुअल रियल लाइफ कंजरिंग में जो होता था वो काफी ज्यादा स्कैरी था देन व्हाट हैज बीन शोन इन द मूवी. सो यू कैन इमेजिन. It does. Okay. A sensor in the foreground on the right, first lift. Okay. But the most interesting part is the strange shadow. Nobody in the house is moving. The family can be seen in cams film. Correct. Okay. It's starting. There's a lot of things about Corey and Jennifer. Well, what's one thing? Picture shadow दिखा. Oh my god. Keep an eye on. Yeah. There's a lot of things about Corey and Jennifer. And this is just one random day. वहाँ पे shadow figures बहुत कम हैं. Clearly, the library door opens. जो भी बिलीव नहीं करते हो ना, go and try staying in the Conjuring house. सब बिलीव आ जाएगा. This is actually demonic because इतने सारे एक्टिविटीज इसलिए होते हैं because एक तो डिमोनिक काफी पावरफुल है, द किचन सिंक है. दूसरा बहुत सारे सालों से बहुत सारे स्पिरिट्स हैं वहाँ पे. This image was captured on viewer's cell phone. The basement. The basement's obsessed. Video interpret. मुझे कोई मिस नहीं देगा बट जॉन स्वेट का कोई स्ट्रेच. फट गई भाई. Grammar. Increase. Password. Order. Flow. Text. Sun. Man. Drag. Disturb. Hell. What the hell? Moan. Is anybody else Cain? Why is that different sounding? Anybody else noticing that? Hell and Cain just came out differently. Yep. We're having fun now. All the same as night. Bill. Van. Bill. Palatine. Muddy. Geek. Bill and ये एक्चुअली उस घर का उस टाइम पे ओनर था ये बंदा. अभी आई थिंक चेंज हो गया है. बट एक्चुअली डिड यू गाइस हियर वो ये स्पिरिट टॉकर चल रहा है, मतलब सॉरी ओव्यूलस चल रहा है. मैंने बेसिकली दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे रैंडम वर्ड्स आते हैं एज पर इफ यू क्लिक ऑन. बहुत सारे वर्ड्स है सेम एज कुछ अभी एप्स गोस्ट ट्यूब बोल के एक ऐप है फोन में. आई डोंट नो अबाउट द अदर एप्स, काफी सारे एप्स फेक भी है बट इट वर्क्स बेसिकली लाइक एन ओव्यूलस कि
कुछ words है and random words pop up. It is almost like a spirit talker, but वो disturbance ऐसे नहीं है. But ये hell वाला word कैसे आया अभी? Okay. Claw, chills, head, foot, devil, face, doesn't, Devil, news, like tried, bad phase. words have to be different, like sounding. Exactly. Bad words are totally different. Devil. ऐसे, oh my god. Literally voice change कैसे हो रहा है? Because ये technically automated voice है. एक ही voice में आना चाहिए. Different tone कैसे आ रहा है? और सारे गलत words. Can you see the negative energy or the emotion? The head is crooked. Look how crooked that head is. And the Okay, this kids. is oh god, ये इसका मुंडी इधर को है ऐसे. This is basically an SLS camera जहाँ पे कोई भी ह्यूमन फिगर ऐसे दिखेगा. ठीक है, आपका मेरा भी ह्यूमन फिगर अगर सामने आएगा तो ऐसी स्टिक में दिखेगा. वहाँ पे एक्चुअली कोई नहीं है, बट ये स्टिक फिगर दिख रहा है. We're drawing images of मूवी crooked देखा है heads. जिन्होंने उनको पता है Look कि at this गिरने one. That's right in front of the beam right here, guys. एक ड्राइंग भी है कॉन्जरिंग में. Tell us who you are. दीवार में कर्व जो बच्चों का ड्राइंग है. Can you straighten your head up, please? Can you straighten your head up? उसका हेड तो नीचे चला जा रहा है. Bring your head up. There you go. Oh, you just had it. Bring your head up. You can do it. Bring your head up. You're almost there. You're almost there. Bring that head up. Almost there. Bring your head up. We can see you. We can see you. I know you're right in front of us. Did you live here? Did you hurt your neck? Yes, this is crazy. Go ahead, bring your head up. Are you one of the figures that the kids were drawing of? The figure with the crooked head, crooked neck? Can you imagine वो कितनी भयंकर दिख रही होगी अभी. इसका सिर्फ We skeleton do see you. You're standing in front of us. Did you die in this house? I don't like this. Can you lift that head up for me, please? No, If it's you not say your anything, pet. Gonna ask we it's can pick gonna you up do on that. audio as well. Guys, I've never had a stick figure stay on here this long. This thing, whatever it is, where's that beam? In front of us? This thing is right in front of us. Lift that head up. You can do it. Can you come closer to us? Can you walk closer to us, please? Are you having trouble? Wow. There you go. There's that head. Almost up. Almost up. There you go. There you go. Thank you so much. I knew you can do it. तो जैसा कि मैंने पहले बोला है, this video is basically for people who do not believe. Coming from an atheist, because Carolyn Perrin was an atheist, and whoever amongst you are atheists, yeah, I mean, believe or not, maybe अगर life में really नहीं हो तो नहीं होगा believe, but trust me, maybe you do not want to experience all these things, because it can be a lot draining and very very negative. So अभी जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो लोग constant owners change होता रहता है, वो लोग paranormal investigators है और वो एक ही कमरे में सभी एक साथ मिलके सोते हैं. It's like that because trust me that not only about that house, this video was, I made this video on Conjuring house just to show you the story of an atheist to a believer. क्योंकि काफी सारे लोग आई नो अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि भूत होते हैं क्या रियल में, सच में होते हैं क्या, मजाक बनाते हैं या फिर कुछ भी अनशन सा वीडियो बना देते हैं कि यू नो किसी को सजा के भूत बना दिया, ये वो पाकिस्तानी घोस्ट हंटर्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट ट्रूली डीपली ये वीडियो उन लोगों के लिए था कि जो लोग बिलीव नहीं करते. लाइफ में ऐसा होता है ब्रो और ये रियल होता है. एंड कॉन्जरिंग हाउस इसीलिए चूज किया मैंने क्योंकि ये एक बहुत लिविंग सा एग्जाम्पल है ऑफ पैरानॉर्मल थिंग एंड अभी भी है वो हाउस एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी. और जिन लोगों ने एक्चुअली में फेस किया है उन लोगों को दिखाया मैंने आपको, उन लोगों के साथ एक्चुअली में ये हुआ है एंड अभी भी वो घर कैसा दिखता है, अभी भी वहाँ पे कैसे चीज़ चलती है. दैट आई ट्राइड टू शोकेस टू यू गाइज एंड या आई थिंक most definitely if you're a believer
then definitely अगर भगवान होता है तो demons भी exist करते हैं. And if you're a non-believer or an atheist, then I hope you stay an atheist, because maybe experiencing something like this is not worth it. But अगर ऐसी life में होता है, then I don't think you're gonna be an atheist, bro, anymore. क्योंकि मर के हम कहीं ना कहीं पे तो जाते ही है. So वो तुम believe करो या ना, जाते तो है हम, bro. Saying that, signing off from today's video, and hope you guys enjoyed this episode. And literally यार, मैंने वीडियो शुरू किया था टाइम से, मैं खत्म भी करूँगी टाइम से. 2:12 of night. My dog is still sleeping. And I hope you guys watched the entire video and you guys enjoyed it. And see you in the next video. Till then, ciao and stay happy. And remember, we are the positive light, so don't be scared ever of anything.